ये दो पार्ट में आएगा. Here is a question number 7. Just open the question number 7. So what is said? Which of the following statements regarding Mount Kilimanjaro in Africa is correct? So here are the options. It is situated on the equator. It is the highest freestanding mountain in the world. Select answers. Okay. तो देखते हैं माउंट किलिमंजारो अफ्रीका. तो पहले हम इधर रॉफ में अफ्रीका का एक बना लेते हैं मैप. ठीक है. ये आपको थोड़ा समझ में आएगा. थोड़ा नहीं हुआ थोड़ा ऐसा करते हैं. एक बार ओके. तो हम देखते हैं कि ये इक्वेटर के पास कहाँ पर है. तो ये हमारा आ गया अफ्रीका. ये वाला जो ये पेनिनसुला हो गया इसका. यहाँ पर जो माली लेबनान ये बन गया अफ्रीका. ठीक है. So it is situated in the equator. It is the highest freestanding mountain in the world. It is situated. Here is the equator. We draw. Here is the equator, and Mount Kilimanjaro is located in this part. So yes, it is near the equator, and it is the what you mean by the freestanding mountains. Okay, मतलब ये जो बोलते हैं ना हमारे माउंटेन रेंजेस, कोई रेंजेस में नहीं होते हैं. ठीक है. ये फ्री स्टैंडिंग होते हैं. मतलब ऐसे ऐसे पर्वत मतलब जो माउंटेन रेंजेस नहीं होते हैं. ऐसे फ्री स्टैंडिंग माउंटेन्स होते हैं. ठीक है. सो इज इट द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड? यस, द आंसर इज यस. सो द करेक्ट आंसर इज सी. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. Okay. So come to next. So for second question, the question number 8. Second question है मतलब question number 8. The RLC in Central Asia is situated along which of the following countries? In between which of the following countries? ठीक है. तो यहाँ पर चार ही ऑप्शन है. अगर आपको तुर्कमेनिस्तान भी एक नाम पता होता तो इसका आंसर सी होता. ठीक है. मैं आपको लोकेशन थोड़ा रफ में करके दिखा देता हूँ. ठीक है. ये हमारा इंडिया रह गया, ये म्यांमार रह गया, तो ऐसे ऐसे करके चाइना वाइना होकर ऐसा रसिया. ये ठीक है. तो ये जगह लोकेटेड था हमारा आरएलसी बिटवीन द उज्बेकिस्तान एंड द तुर्कमेनिस्तान. ठीक है. सो द आंसर सी इज द राइट आंसर. नंबर 8 is between the Uzbekistan and the Turkmenistan. Okay. Yeah. Come to the next question. The question number 9. Which of the following statements regarding Galapagos Islands in Pacific Oceans is or are correct? Here is the two statements. They are formed due to volcanic activity. They are the part of the South American nation Peru. So it's a volcanic island, Galapagos Island. So here we draw some rough pictures. Okay. This is the South America. Okay. So the Galapagos Island, here is the location. That is the Galapagos Island. So क्या आपको लगता है यहाँ पर नदी के बीच में एक आइलैंड कहाँ से आया होगा? Folding, of course, that is a volcanic activity. So Galapagos Island is a volcanic island. Okay. So sorry, they are part of the South American nation Peru. So it is near the equator. It is the equator, and here is the country Ecuador. Here is the Peru. Is it the part of the? No, it is not. Here is the Peru. And here is the Ecuador. So it is the part of Ecuador, not Peru. Okay. The option 2 is absolutely wrong. So here is the statement 1 is correct. Okay. So next part. Here is the only one option is correct. Which one of the following provinces of sorry, there is some
क्वेश्चन मिस्टेक्स. Actually, the question था which among the following is the is of ancient city था हमारा टैक्सिला. था होगा आपको टैक्सिला. अशोका जो था तो उसका कैपिटल था एक टैक्सिला, उधर था एक उज्जैन. ओके, सो which among the following इनमें से टैक्सिला हम आगे मतलब एंसेंट में किसको बोलते थे? इस नंबर सी पंजाब. सो here is the number C is the right answer. Then we'll move to the next. Then we move to the next part. Okay, here is the question number 11. Okay, here is the question number 11, and the question is the prime meridian does not passes through which of the following countries? Okay, उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन किसको बोलते हैं. थोड़ा इससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट डू मीन बाय प्राइम मेरिडियन. ओके, अगर ये हमारा पूरा आर्क हो गया तो इनको हम कई सारे लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किए. ठीक है, जो जहां से ये लॉन्गिट्यूड्स शुरू हुए हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. ओके, मतलब 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. ठीक है, वहां से टाइम काउंटिंग होना शुरू होता है. उसके बाद +1 करके वो जब फुल चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब क्लियर कर लेंगे. लेने देते हैं. ये हमारा मुद्दा है कि कौन से आइलैंड कौन से कंट्री है जो कि उनके अंदर आते हैं. ठीक है, मैं रॉफ बना देता हूँ. यहाँ पर म्यांमार हो गया, इधर हमारा आ गया जो पोर्तुगीज, इधर अरब पेनिसुलर्स, और इधर अगर हम मार्क करें तो ब्रिटेन, इंग्लैंड कहीं हो गए, तो आयरलैंड, यहाँ पर ये यहाँ पर अफ्रीका है, वहाँ पर साउथ अमेरिका, वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है. हमारा मुद्दा है कि यहाँ पर ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन नहीं तो इधर नहीं होगा, पोर्तुगीज थोड़ा यहाँ पर होगा, छोटा कर दिया था. ठीक है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये किस किस कंट्री को टच करके जाता है क्वेश्चन में ये आया था. ठीक, क्या इंग्लैंड को टच करके जाता है? ऑफ कोर्स ये सब शुरू हुआ है फ्रांस. हाँ, ऑफ कोर्स ये वाला फ्रांस है. तो पोर्तुगल नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर रह गया. स्कॉटलैंड भी नहीं होगा. ठीक है, तो आंसर 1 and 2 ओनली. तो आंसर क्या है इसमें? ओके, इरेज देम ऑल. One minute. Okay. The correct answer is not passes. Okay. Not passes means number 3 and 4. So Portuguese and Scotland. So number C is the right answer. Okay. Then which one of the following process describe the movement of particles or molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration? And it is the process of diffusion. Of course, the process of diffusion. So come to the next question. Okay, come to the next question. Yeah. So which among the following correctly shows the pathway of water movement in a root? वाटर मूवमेंट प्लांट्स में कैसे होता है? कोर्स थ्रू द ट्रांसपिरेशंस. ओके, थ्रू द ट्रांसपिरेशंस. सो आता कहाँ से है? पानी आता है रूट से. ठीक है,
ये जो जाइलम होता है ना, एंजाइम्स प्लस H2O, ओके, ये रूट से जाकर यहाँ स्टेम से जाकर लीफ तक आता है। और यहाँ पर लीफ क्या करते हैं ना, ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो इस तरह प्लांट में होता है वाटर का सर्कुलेशन, ठीक है। तो इस ये जो पार्ट है, हमको क्वेश्चन में ये रूट वाला पार्ट पूछा गया है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली शोज द पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन वाटर। सो इट इज द, ये थोड़ा मतलब बायोलॉजी का जो सीड एग्रीकल्चर के ऊपर था क्वेश्चन, द सीड सॉरी बायोलॉजी बिकॉज ये एनवायरमेंटल के एक है ना, हमको स्टेम्स रूट उनके क्लासिफिकेशन वो सब एनवायरमेंट पे जाएगा, ठीक है। ये जो वाटर मूवमेंट, जाइलम, H2O, ये कैसे मूवमेंट होता है ना, ये सब बायोलॉजी के अंदर में जाएगा, ठीक है। तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिक्स, कॉर्टेक्स, क्या होते हैं, पेरिसाइकल, दैट इज द करेक्ट। सो So the next question is number 14. After few days of sowing of maize seeds in the soil, irrespective of their position, the radicle always grows downward, whereas them always grows upwards. This phenomenon is known as, okay, ये टर्म यहाँ पर आप अगर कैप्चर कर सकते हैं, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब इट इज प्रोज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी हुआ तो आंसर जियोट्रॉपिज्म होगा। चलो बता देते हैं कि जो फोटोट्रॉपिज्म होता है, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट, जिस लाइट का सोर्स जहां पर होता है, पेड़ उसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगर ये लाइट की तरफ मूव करता है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर ये लाइट के ऑपोजिट मूव करता है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। एंड व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोट्रॉपिज्म? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जहां पर इसको वाटर के सोर्स में रूट्स बहुत गहरे तक जाते हैं, ठीक है। तो इट इज लाइक हाइड्रोट्रॉपिज्म कि जहां पर पानी मिलता है, ट्री उसके डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ठीक है। जो बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड व्हाट इज टर्म बाय केमोट्रॉपिज्म? ऑफ कोर्स फ्रॉम it is by the chemical agents like the pollens and the pollinizations occurs is the example of the chemotrophism, okay. Next, number 15. So which one of the following technique is jointing parts of two plants from a composite plant? Okay, it is, the answer is grafting, of course. वर्टिकल लेयरिंग, लेयरिंग क्या होता है कि ये मतलब पेड़ हो गया ना, तो इसको बेंड करके, इसकी मतलब बेंड करके इसको जो आगे वाला हिस्से को नीचे जमीन में गाड़ देते हैं, तो यहाँ से भी रूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं लेयरिंग। कटिंग क्या होता है कि ये पेड़ का मतलब ब्रांच है, तो इसे कट करके मैं लेके एक सॉइल में इसे कर दूंगा, मतलब लगा दूंगा, तो उसे बोलते हैं कटिंग। बडिंग क्या होता है, ठीक है। बडिंग एक ऐसी चीज होती है, समझ लो कि ये है पैरेंट, ओके। तो इस पैरेंट बॉडी की कहीं जगह से भी एक न्यू, एकदम बिल्कुल न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा, उसे बोलते हैं बॉडिंग। सो हियर इज द आंसर इज ग्राफ्टिंग। So come to the next question, number 16. So physics, chemistry in the part 2, let's just skip it. Come to the next part. Number 17. For one book, 1857, the author is Esensen, and the civil rebellion in the Indian Mutiny. Here is the author is S.P. Chaudhary, and the Sepoy Mutiny and the revolt of 1857. Here the author is R.C. Mazumdar, and the Awadh revolt of 1857 to 1858. And the author is Rudra Haj. Here is the option लिखना मैं भूल गया था, छोड़ गया। This is the number 18 question. What is the number 18? Which among the following statement about the Vijayanagara Empire is correct?
The number A is the Colin Mackenzie was the first Surveyor General of India to visit the Vijayanagar. Okay. The number 2 is John Marshall was the first to take detailed photographs of the site. Here is the James Borges. Here is the not John Marshall. It is James Borges. Okay, this is James Borges. James Borges was the first to undertake the conservation at the Hampi. No, actually it is John Marshall was the first to take the detailed photographs of the site. Yeah, it's the right. Colin Mackenzie was the first Surveyor General of India. Okay, here is the in option A. This is right. Colin Mackenzie was the first Surveyor Governor of the India. ये ठीक है, ठीक है. इसके बाद ये जॉन मार्शल है ना, जॉन मार्शल एक्चुअली द फास्ट टेक द डिटेल, ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे क्योंकि जॉन मार्शल नहीं था जो इस साइट का फोटोग्राफ लिया था. इसे मैं चेक करके बताऊंगा आपको, बट appropriate answer is option 1. Colin Mackenzie is the first Surveyor General of India to visit the Vijayanagar Empire. Okay, and here is the list number 2. साइट अली रईस. Here is टू लिस्ट कि जो हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे किन किन देशों से हमारे इंडिया को घूमने के लिए आए थे. पहले तो आपको पता होगा इबन बतूता जो कि मोरक्को से आया था. ठीक है, अगर और कुछ भी आपको पता नहीं है ना तो आप ऑप्शन को गेस करके भी मार सकते हैं कि जो अली मतलब थोड़ा टर्की सा लग रहा है, जो बारबोसा जो आपको देखा हुआ ना पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में बारबोसा सब पोर्तुगल के लोग होते हैं जो बारबोसा फारबोसा जो टाइटल्स मतलब पीटर मुंडी इज पीटर पाकर बोल रहा हूँ आपको, मतलब ऐसे भी आप मार सकते थे अगर आपको सिर्फ इबन बतूता मोरक्को आता होगा ना तो ये सब ऐसे भी केस करके हो जाता है. थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पढ़े हो तो ही ये सब होगा. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि कनेक्शन बिठाना पड़ता है कि कैसे होगा क्यों होगा, क्योंकि हर कुछ आप 100 to 100% कवर कर कर एग्जाम तो नहीं जा सकते. ठीक है, तो यूज सम ब्रेन. So here is the number 20 question. So here is the answer. देख लीजिए नंबर 19 का यही है, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वही सही होगा. ठीक है, नंबर 20 को आते हैं. इस पे लिखा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में कौन कौन सी बातें सच्ची है बताइए. ठीक है, CFC remains inert in the troposphere but slowly diffuse into the stratosphere. Of course, CFC अगर ट्रोपोस्फियर में इनर्ट नहीं होता तो हमें बहुत दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में भी कुछ ओजोन्स होते हैं जो कि गुड ओजोन्स होते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक नहीं होते. सो यहाँ पर जो CFC मिलता है ना, जो कि AC रेफ्रिजरेटर से हमारे निकलती है, ट्रोपोस्फियर में इनर्ट होती है, लेकिन जब स्ट्रेटोस्फियर को जाती है तो स्ट्रेटोस्फियर के वाले ओजोन के साथ मिलकर वो क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे हो जाता है कि मतलब ऐसे फ्लोरोकार्बन गया ना CFC. ठीक है, जब फ्लोरो का जो Cl है ना क्लोरीन, ये क्या करेगा O3 कैसे बनता है O2 प्लस O. ओके, ये जो O फ्री घूम रहा था ये Cl उसे पकड़ लेगा, बना लेगा Cl. ठीक है, इसी तरह से हमारे ओजोन लेयर में होते हैं छेद. ओजोन होल्स कैसे, ओजोन होल मतलब होल नहीं, तो ये जो Cl एंड O जब कंबाइन हो जाते हैं तो इस O2 को सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है ओजोन फॉर्मेशन करने के लिए. इसलिए आज का मुद्दा है कि जो हमारा अंटार्कटिका रीजन जो नॉर्थ पोल के ऊपर जो रीजन के ऊपर जो ओजोन होल हो रहा है तो वहां पर रिएक्शन यही सब हो रहा है. ठीक है, वहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतने अमाउंट में हो गए हैं तो कि वहां पर ओजोन बन ही नहीं पा रहा, तो ऑफ कोर्स ओजोन होल होगा ही. तो नेक्स्ट हो जाते हैं. तो each
Chlorofluorocarbon can initiate its CLO can initiate a series of chemical reaction leading to the destruction. बताया आपको, से बोलते हैं ओजोन होल। और इस ओजोन होल को हम कैसे बंद करें, क्योंकि ये 1980 के बाद से बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है ओजोन होल। ऐसे मतलब न्यूज आ रहे हैं कि कम हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ओजोन होल बढ़ता ही जा रहा है। आप सही मतलब थोड़ा माइंड लगाएगा ना, सब एसी रेफ्रिजरेटर सब चीजों, हम आज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 पे आ गए हैं। इतना सब होने के बाद भी आपको लग रहा है कि सीएफसी कम रिलीज हो रहा होगा एटमोस्फेयर को। तो यार तीनों ही आंसर यहाँ पे ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 21 पे। हियर इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट टॉपिक, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जो होता है ना साइकिल्स, द न्यूट्रिएंट साइकिल्स, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल्स, ठीक है। इसी के बीच से एक है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन जो हमारा होता है ना, नाइट्रोजन ये क्या करता है ना, अमोनिया के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अमोनिया तो डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकते हैं, प्लांट डायरेक्टली अमोनिया उसके बॉडी में नहीं ले सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। जब ये नाइट्राइट नाइट्रेट पेड़ लेता है तो फल फूल देता है, हम खाते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन हमारे अंदर में भी आ जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उस नाइट्राइट को वापस अमोनियम में बदलकर वापस एटमोस्फियर में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पूरा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो 21 का आंसर हमारा इस नाइट्रोजन साइकिल के बारे में नहीं था यहाँ पर, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग NH2 टू NH3। यस राइट, ये अमोनियम क्लोराइड है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो उसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तभी पेड़ उसके रूट के माध्यम से ले पाता है, तभी हमारे तक नाइट्रोजन पहुंच पाता है, ठीक है। और उसके बाद डिकम्पोज होकर ये फिर से आ जाता है, तो इस पर फिर एक साइकिल चलता रहता है। नंबर 2 है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया टू नाइट्राइट, द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस और द रिडक्शन NO3 एंड, ये आपको देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, NO3 एंड NO3 दोनों एक ही है, NO3 और NO3 माइनस, ओके दोनों एक ही है, से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि the NO2 followed by the recycling of the NO2 to the atmosphere। कोर्स मैंने आपको बताया कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि नाइट्राइट को वापस से अमोनियम में कन्वर्ट कर कर एटमोस्फियर में छोड़ देते हैं। तो यह पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ना, ये बोल रहा है इसमें नाइट्राइट अमोनियम नाइट्रेट ना लगकर इसको सैम्बल्स लिखते हैं ना, इसलिए थोड़ा ऑड लग रहा है। इन द डेंट्रिफिकेशन converts the molecular into a fixed form of the organic nitrogen is the point. In denitrification, the convert molecular nitrogen into fixed form of gaseous nitrogen। यहाँ पर गैस ऊपर ही जाएगा ना एटमोस्फेयर को, अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाएगा तो एटमोस्फेयर को हो जाएगा कैसे, इस मतलब साइकिल कैसे होगा, ठीक है। So here is the only option 1 and option 2 is correct. So our answer is option B is correct. Okay. So here is the 22nd question. Come consider the following statement about different biomes. Okay. The tropical savanna biome is a tropical grassland with drought resistant tree. Okay. The first option. Second, the temperate deciduous forest biome is a high altitude region in the Himalayas. Okay. And the third question, okay, the third option is showing that the temperate coniferous forest biome is found in very dry environment where the temperature ranges from very cold to very hot. No, कोनिफरस फॉरेस्ट हॉट रीजन में कहाँ पर आएगा, कोनिफरस फॉरेस्ट है ना, ये डेजर्ट में किधर से आएगा, डेजर्ट में तो हमारे जो कांटे वाले
पेड़ आते हैं, तो कोनिफरस कैसे आता है? गलत हो गया ना। तो tundra biome is found in the polar regions and characterized by the absence of tree or plants, wet, spongy and rough paper brown surface. That is right. So here is only option. So here is the B answer is right. So option C is incorrect क्योंकि टेम्परेट हो, कॉनिफरस फॉरेस्ट कोल्ड रीजन में आता है, वेरी हॉट रीजन अगर ड्राई डेजर्ट का रीजन में आ जाएगा तो कैसे कॉनिफरस फॉरेस्ट आएगा? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो here we skip the physics part, we will cover it in next. So okay, now come to the question number 28. It is as per the Constitution of India, which one among the following statements is correct? The CAP means the Controller and the Auditor General is appointed by the President of India and remains in office during the pleasure of the President. Is it correct? No, CAP is not in during the pleasure of the President. Okay, CAP pleasure of the President नहीं होता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 149, it gives it a constitutional status to the CAP. So he is not the pleasure of the President. So it is not correct. The administrative expenses of office of the CAP are charged upon the Contingent Fund of India. No, Contingent Fund of India is only for, it is an emergency fund. Extra 500 crore is, इसको अलग रखा जाता है, इमरजेंसी के टाइम में यूज कर सके. जब तक कि मतलब बजट में से मतलब 100 करोड़ ज्यादा का नीड हो रहा है तो इस कंटिजेंस फंड से उसे निकाल कर जब बजट का दूसरा साल शुरू होता है तो इसे रिस्टोर किया जाता है. ठीक है, तो इट इज नॉट फ्रॉम द कंटिजेंस फंड ऑफ इंडिया, इट इज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ओके, the next part. So the reports of the CAP relating to the accounts of the union and the state are submitted to the President of India. Seems right? Okay. The President of India shall cause the report of CAP relating to the accounts of the union to be laid before each house of the Parliament. Okay. The reports of the CAP relating to the accounts of the union and the state are submitted to the President of India. Is it right? Or the President of India shall cause the reports of CAP relating to the accounts of union. It's not union plus state to be laid down before the each house of Parliament. So here's the option C is right. क्योंकि सब कुछ आखिर में घूम घाम कर प्रेसिडेंट के पास से आखिर में जाता है क्योंकि ये देते हैं हमारे मेन चीफ असेंट और जो भी करते हैं यही करते हैं, इनके नाम पे सब कुछ चल रहा है, बाकी तो सब काम कर रहे हैं इनका नाम चल रहा है. ठीक है, तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को. तो इसका आंसर हो गया सी. ओके, 28 का ये सब बस सेट ए का है. ठीक है, ये सब सेट ए का आंसर है, तो इस हिसाब से आंसर कीजिएगा. ठीक है, तो which of the following statements is correct as per the Constitution of India? इस बार पॉलिटी से मैं बताऊंगा आपको किस टाइप का क्वेश्चन आया है. The polity of India has the power to make provision with respect to the delimitation of the Constitution. So what do you mean by that? Some keywords I catch: delimitations and constituency. And here are many other keywords. No, there are two keywords: delimitations and the constituency. So what do you mean by the constituency? एक MP कभी MLA था, मतलब है तो ये किसी कंस्टिट्यूएंसी ही तो चुन के आया होगा. कंस्टिट्यूएंसी से तो चुन के आया होगा ना. एग्जाम्पल जैसे राहुल गांधी अभी केस आया था उनका, तो ये राहुल गांधी हमारे वायनाड के कंस्टिट्यूंसी से है. ठीक है, इसी तरह से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द
Parliament of the India has the power to make provisions with respect to the delimitations. Delimitation का मतलब ये होता है कि देखिए ये हो गया गोवा, ये हो गया यूपी। गोवा से ज्यादा कितने कंस्टिट्यूएंसी से एमपी आ सकते हैं? यहाँ से कंस्टिट्यूएंसी से कितने ज्यादा एमपी आ सकते हैं? अगर इसका पॉपुलेशन 2010 में 10 था तो 2020 आते आते इसका पॉपुलेशन अगर 20 हो गया तो ये जो लोग बढ़े 10 से 20 हुए, 2 गुना हो गए, लेकिन उन 2 गुना लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए वही 1 गुना के बराबर ही एमपीज है ना। अगर इस यूपी में 2010 में 10 एमपी थे, 2020 में 20 एमपी हो गए, ठीक है। अगर 2010 में इस एमपी में 10 लोग थे, इस 10 लोग का एक ही एमपी था, अगर 2020 में ये लोग बढ़कर 20 हो गए, तब भी इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही एमपी है, तो किसे होगा? तो ये नाइंसाइड हो जाएगा ना, क्योंकि सबको बराबर का कंस्टिट्यूएंसी का वोट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए पार्लियामेंट लेके आता है डिलिमिटेशन कमीशन की। ये 10 साल में जो हमारा जनगणना होता है ना, ठीक है, ये उनके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का हेरबदल करते हैं। द वैलिडिटी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट सेक्शन हो या फिर जुडिशियल सेक्शन हो, कोई एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा सकता, ठीक है। इज द फास्ट ऑफ आर्टिकल 50, सॉरी, is the first of Article 50 separation of the power, कि कोई किसी के सब इंडिविजुअल है, ठीक है। मैं तुम्हारे कोर्ट के अंदर दिमाग कर नहीं डालूंगा, तुम मेरे कोई भी प्रोसीडिंग में टांग मत अड़ाना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं द वैलिडिटी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द डिलिमिटेशन। ये जो भी करेगा पार्लियामेंट अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। इसमें कोर्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप 10 सीट देने थे, क्यों 20 दे दिए भाई, ये तुम जाकर कोर्ट नहीं करेगी, तो कोई सवाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये ओनली समन कि तुम अगर देख लो ना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पार्टी को तुमने तो चुन के वहां पर डाला है ना, तुम ही कल सुबह क्वेश्चन उठाने के लिए जाओगे कि मतलब ये सब चुने हुए जो नेता है ना, उन्हें आप नहीं, इन्हें चुन के लोकसभा राज्यसभा में भेजा है, ठीक है। तो वो करते हैं हमारे डिलिमिटेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अभी इसे मिटा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए। तो इसका आंसर हो गया both 1 and 2 is correct. Question number 29. So come to the question number 30. Consider the following statement. ये आपको कंसिडर कीजिए। बड़ा क्वेश्चन सब देखता है, जो दिख रहा है ना, चलिए कुछ नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट ही आंसर होता है, कोई घुमा फिर कर नहीं पूछते हैं लोग। ये डायरेक्ट कहाँ पर लिखा हुआ होता है, देखिए जैसे 1 2 3 है ना, ये अगर सर्च करेंगे आर्टिकल 341, सब प्लस 1 है, सब प्लस बी है, सब प्लस सी है, सब प्लस डी भी है, तो इन्हीं सब प्लस में से ये सब उठा के डाला गया है, ठीक है। सॉरी आई कैन मिस्टेकली टोल्ड दैट। ये है नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, ओके, इस 33 38 है इसका, सॉरी मिस्टेक। Special provision was made in the Constitution of India by the Constitution Act 2003 to establish the National Commission for the Scheduled Tribes. The National Commission for the Backward Classes, sorry, it's not correct. Okay, the National Commission for the Backward Commission for Class, the National Commission for the Minorities, the National Commission for the Scheduled Castes are constitutional bodies. Okay. Backward class, scheduled caste तो चलता ही होता है। National Commission for Minority कहाँ पर मेंशन नहीं किया गया? This is incorrect. The National Commission for Women is not, of course, is not a constitutional body, क्योंकि जो 338A और B सब प्लस है ना, ये बोलते हैं कि the Commission of SCs and STs
Then it's no word of mention minorities, and there's no mention of it's not a constitutional body. Okay. Answer. The answer is 1, 2, 3. Ethically, what is not correct? 1, 2, 3, all are wrong. Okay. Come to next. Here's some questions of chemistry. Skip it for tomorrow. Part 1. Which of the following statement regarding the tropical deciduous forest in India is correct? They are the most widespread forest in the India. Widespread forest of India, of course, yes, because if we draw India map here, okay, okay. So अगर हम देखें तो यहाँ पर है हमारा डेजर्ट, यहाँ पर है हमारा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, इधर इधर हमारा हिमालयंस, आगे मोसेस, हॉर्स, यहाँ पर सब आ गया कोनिफरस, जो भी आपको दिखना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ज्यादातर रीजन में हमारे क्या है, ये डिफरेंट पार्टी के स्टोर है जहाँ पर हमें मिलते हैं प्लांट सॉइल, जहाँ पर कॉटन अच्छा होता है, ठीक है। तो ज्यादातर इलाके में हमको ऑफकोर्स ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हमको मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर भी मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और अंडमान निकोबार वाले एरिया पर भी आपको मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया डेजर्ट एरिया, और ज्यादातर जगह में हमको ट्रॉपिकल डिसीजन मिलते हैं। दे स्प्रेड ओवर द रीजन व्हिच एनुअल रेनफॉल इज बिटवीन 70 to, that is right. So both option A and option 2 is right. And what do you mean by the जो एवरग्रीन है ना, उस पे 250 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है, लेकिन इधर 70 से 200 तक होता है, ठीक है। Both 1 and 2 are right. Then come to the 42 number question. Which of the following statement regarding the groundnut cultivation in India correct? Groundnut is a rabi crop? No, groundnut is a kharif crop. Okay, it is a kharif crop. Gujarat is an important state for the groundnut. Of course, Gujarat is the important state for the groundnut cultivation. The answer 2, only option 2 is right in 42 question. 42 number question. Then come to the 43. What is the 43? Which one of the following states are leading producer of bauxite in India? Annual report in Ministry of Mines in 2022 to 23. So बॉक्साइट कहाँ पर ज्यादा मिलता है? ये जो हमारा रिपोर्ट आ गया ना, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में करंट अफेयर्स से आया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो न्यू अपडेट किए हैं एनुअल रिपोर्ट को, उसमें बॉक्साइट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो स्टेट प्रोड्यूस करता है उनका नाम बता। उड़ीसा इज द फर्स्ट, there is no Chhattisgarh, no, it's Gujarat. Forty-three. Number like Odisha, na? It's Odisha and Gujarat. Number C, I think, na? The C answer is correct. Then, as per the okay, there is the question number 44. After the Indian State of Forest Report of 2021, which of the following state has maximum percentage of its geographical area under the forest cover? ये ट्रिक क्वेश्चन। ट्रिकी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आंसर तो होगा मिजोरम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। अगर ये लिखता होगा कि मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर कहां पर है, तो वो होता मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया बड़ा है तो फॉरेस्ट कवर भी वहां उसमें ज्यादा होगा। मणिपुर मिजोरम में उतना सा परसेंटेज ज्यादा होगा, लेकिन एरिया वाइज एमपी में ज्यादा फॉरेस्ट कवर हमको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। ओके,
Number 45. ये भी many fruits burst with a sudden shock because of which the seed are scattered a few words from the parent plant. This type of disposal of seeds is known as चार उनके टाइप्स है। इसका आंसर होगा ऑटोक्रोनी। यहाँ पर क्या होगा कि मतलब यहाँ पर एक पेड़ था, ये पेड़ जो सीड देगा तो इस पेड़ में जो सीड इसके अगल बगल में आके गिरेगा, मतलब क्या ब्रस्ट हो गया, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली पेड़ उगने लगेंगे, उसे बोलते हैं ऑटोक्रोनी। ये जो हमारे क्वेश्चन दिया है ना, स्टार्टेड फ्यू इयर्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो इसका मीनिंग ये है, ये तो इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी ऑटोक्रोनी, ठीक है। और ये जूटोरी जो कि एनिमल के मदद से होता है, ओके, जैसे कि हमारे क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया कि ये सब चीजें हमारे जाते हैं जूटोरी पे। और ये जो आता है ना हाइड्रोकोरी जो होता है ना, ये वाटर पे, ये द हेल्प ऑफ वाटर, और ये तो आनी, ओके। और ये सब जो बाकी चीजें है ना, ये सब है ना जो पेड़ कैसे ग्रो करते हैं, सीड ट्रांसपोर्ट किस माध्यम से होता है और जाकर कैसे ग्रो हो जाता है। जैसे हमने आनी को ये कि विंड के माध्यम से जो होता है ना, विंड, अगर विंड के माध्यम से कोई सीड जाकर ट्रांसपोर्ट होकर ग्रो हो गया तो उस एनिमल को बोलते हैं ये हो गया। जैसे पानी हाइड्रो, ऑटोकोनी मतलब जो पेड़ के आसपास कुछ यार्ड तक अगर उसका सीड जाकर नए पेड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोकोरी, जो कोई बोलते हैं द हेल्प ऑफ एनिमल। तो आंसर सी इज द राइट, इज ऑटोकोरी। तो द नेक्स्ट नंबर 46, which among the following diseases is characteristically and specifically linked to asbestos? The option A is the right, the liver fibrosis. Number 47, which one of the following diseases does not yet have any effective vaccine? That is the viral hepatitis C. Which one of the फॉलोइंग छोड़ दीजिए सब, गलती से तो बोल दिया, ये सब जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कल, ओके। तो नंबर 50 को आइए, द टू medieval period canals originating from the Satluj and Yamuna rivers and joining the tunnel were made at the order of, देखिए यहाँ पर अब इतने मतलब वैज्ञानिक मत में क्या दिया गया है, जो सतलेज यमुना, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे ना, यहाँ पर एक दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरा दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा दिया है फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। अगर आप हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को ढंग से पढ़े हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होता फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इन्हीं की ही टाइम में कैनल्स का डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो उससे अगर आप कनेक्ट कर पाते कि हाँ हुआ होगा कैनाल ये, तो इसका आंसर होता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन 3 वर्क्स ऑन द साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड संगीत राजा, संगीत मीमांसा एंड शुद्ध शुद्ध प्रबंध, शुद्ध प्रबंध। इसका आंसर हो गया और महाराणा कुंभा वगैरह, सब पूरा रट्टा मार क्वेश्चन, इसको कुछ समझ समझाने के बारे में ये सब बुक्स एंड ऑथर्स बहुत आ रहे हैं, इनको तो अब मतलब स्पेसिफिकली इनको देखना मिलता है, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर 52 क्वेश्चन, तो व्हाट इज द 52 क्वेश्चन, ऐसे व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग टेंपल्स कंस्ट्रक्टेड बाय क्वीन लोकतो महादेवी इन Patakai is a UNESCO World Heritage Site? And the answer is from the recent news, the Virupaksha Temple. Come to the 53 number question. Which among the following statements of the correct? Alias Divya Prabandham is an anthology of Albertson's composition. Devaram is a collection of Tamil Saiva hymns. The Nalayar's Divya Prabandham is also described as the Tamil Veda. ओके, यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ पर कीवर्ड्स स्टार्ट कीजिए। एक है नालायरा। नालायरा क्या है?
कि एक सेक्ट होता है, ठीक है, जिनमें 14 सबसेक्ट इनके अंदर होते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू है ना, हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वैष्णविज्म, शैविज्म, जैसे हमारे जो हमारे हिंदू के अंदर में ना बहुत सारे सब क्लास होते हैं। इसके जो नहीं आ रहा है ना, ये जो 14 सब क्लास, इनके भी छोटा सब क्लास है, ठीक है। ये जो इसके अंदर एक प्रबंधम है ना, एंथोलॉजी ऑफ द अल्वर सेंस compositions, ये राइट है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि द अल्फा के मैं थोड़ा कर देता हूँ, ये कर देता हूँ थोड़ा। The Nalaya Ditya Prabandham is anthology of Alvar Saint composition, is right? The Devaram is a collection of Tamil Saivahins, is right? The Nalaya Ditya Prabandham is also described as the Tamil Veda. Okay, it's all right. 1, 2, and 3. Number 54 was who among the following is the writer of who among the following is the writer of Krishna Ghosh? Here the answer Srimanta Sankaradev. Okay. Number 55. The question is which one of the following propositions from the book History of British India by James Mill, History of British India, I get it. It written in 1817. अगर आपको सिर्फ भी पता होता ना ये कौन से टाइम में निकला है, आप कोरिलेट कर देते कि अच्छा 1815 को हमारा हुआ था क्या, अवध सिंध एनेक्स। उसके बाद इसी के आसपास हमारे बहुत सारे ट्राइबल्स रिवोल्ट हो रहे थे, यहाँ पर एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ था, रोयकरी सिस्टम, महालवारी सिस्टम। ओके, अगर आप ये इसको जानते हैं ना, तो ये जो बुक, क्योंकि जो बुक सब लिखते हैं उनके कंटेम्पररी में जो भी इश्यूज सब होते हैं ना, उनको आधार करके ही ये सब बुक्स लिखा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द बुक्स बाय द जेम्स मिल, द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट ऑप्शन, the tax payable by the जमींदार should not be more than the 30% of the total purchase। अगर इतना ही 30% अगर 100 से वो लेते तो 70% तो फार्मर के पास बचते ना भाई, तो रिवोल्ट करने का फायदा ही नहीं था, मतलब रीजन ही नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द राइट ऑफ द कल्टिवेटर्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ऑफ कोर्स नॉट, दे एक्सप्लॉइटेड देम, सो दे रिपोर्ट। Option C, the state should remain as the landlord and that each peasant should hold land directly from the state as tenants। Okay. मैंने जब आपको एक बोला था ना रायोट वैली सिस्टम, इसमें क्या होता था, तो रायोट रायोट मतलब क्या होता है, फार्मर होता है ना, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके साथ क्या डायरेक्ट किया, ठीक है। अब कोई भी बिचौलिया नहीं, इमीडिएटर, आप डायरेक्ट हमारे साथ ही रोटी। तो फार्मर्स तो ये जो डायरेक्ट टैक्स लेते थे तो उसे बोलते थे हम राइट वाली सिस्टम। ओके, ये इंडिया का 51% हिस्सा जो है ना, इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ही आधार था। द स्टेट शुड रिमेन एज द लैंडलॉर्ड एंड ईच peasant should hold land directly from the state as tenants। It's the right। Sufficient advantage should be given to the, is talk about some incentive, is क्या ये इंसेंटिव दे रहा था कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए हमारे इंडियंस को, कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए क्या ब्रिटिश कुछ दे रहे थे इंसेंटिव? ऑफ कोर्स नो, only the wrong answer। there is only one right answer is option number C। okay, then वो जो आंसर है कट गया था ना, वो जो खुदराम वाला, ये वाला, खुदराम बोस थ्रू ए बॉम्ब एट ए carriage in Muzaffarpur, which they believed to be occupied by the king's court. Which among the following correctly describe the profession of the king's court? He is a judge। ये पढ़ना पड़ेगा, इसमें समझ वाली बात है। जज। 57। Which of the following is a photochemical? ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही आया था, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट 1 to 3 मार देगा, ठीक है।
फोटोकेमिकल में ऑफिस फोटो मतलब लाइट ना, लाइट केमिकल में आइस तो इरिटेट होते ही हैं। रबर क्रैकिंग अगर वेयर एंड टेयर हो हुआ होगा तो केमिकल उधर ही के वजह से शायद भी रबर में क्रैकिंग आया होगा, तो हीट क्रैक कर कंसिडरेबल डैमेज हुआ। ऑफ कोर्स photochemical smokes are very bad to plants. Yeah. The right here, the right answer. Number 58. Which one of the following trace element is not highly toxic? There is the two keyword to mention here. One is the trace element and another is the toxic. What is the trace element? जो कि minor amount में पाया जाता है, ठीक है, it's small, minute amount, so minor amount, so minor constituents. The trace elements is not highly toxic. कौन सा ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो कि हाईली टॉक्सिक नहीं है? आर्सेनिक है भाई, क्रोमियम ये थोड़ा कम टॉक्सिक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इज नॉट हाईली टॉक्सिक। इसका आंसर इज क्रोमियम। अगर नहीं हो तो क्रोमियम में फैक्ट्री में भी ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है, तो क्रोमियम इज द राइट आंसर। कॉपर इज नॉट ए ट्रेस एलिमेंट आई थिंक, बिकॉज इट्स नॉट ए माइनर कंस्टिट्यूएंट। Okay. Number 59. Consider the following combinations of lapse rate in the relation to the atmospheric region. So, lapse rate क्या होता है? मैं आपको अपने ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है? Okay. It is a graph. Okay. Here is the photosphere. Here is the stratosphere. Here is the mesosphere. Here is the mesosphere. Here is the टेम्परेचर। पहले कम होता है, उसके बाद बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। सो पहले हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर एक टर्म लैप्स रेट क्या होता है, ठीक है? लैप्स रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द एयर। लैप्स रेट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मैं ये ग्राफ क्यों बनाया, ये टेम्परेचर का ग्राफ है। इसे देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर आपको पता होता कि लैप्स रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इन ट्रोपोस्फियर इज द नेगेटिव लैप्स रेट। क्या ठीक है? In troposphere, it is the negative lapse rate. In stratosphere, it is the negative lapse rate. Is it correct? Okay, and some worry with that. Okay, so अभी हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर में क्या होता है। यहाँ पर लिखा है कि ट्रोपोस्फियर में नेगेटिव लैप्स रेट है, ठीक है। यहाँ पर तो टेम्परेचर कम होता है, मतलब लैप्स रेट पॉजिटिव होगा, गलत है। स्ट्रेटोस्फियर इज द नेगेटिव लैप्स रेट, यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्मोस्फियर इज हियर। अगर थर्मोस्फियर में बढ़ा है मतलब ये वाला नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में नेगेटिव, ये वाला सही है। स्ट्रेटोस्फीयर में अगर टेम्परेचर हाइक होता है तो ये वाला नेगेटिव सही है। जो मेसोस्फीयर होता है ना, ये वाला, यहाँ पर अगर कम होगा टेम्परेचर तो बढ़ेगा लैप्स रेट, पॉजिटिव। Okay, so here the only one option is correct. The stratosphere is the negative lapse rate, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। So the answer is only one is correct. Okay. Number 16. Which sphere of the atmosphere is harmful ultraviolet radiation observed? Course यहाँ पर ही तो ओजोन होता है ना। Which of the following is the true phase? क्या कीवर्ड है? ट्रू फेज। ट्रू फेज का मतलब क्या है? जिसका गिल होगा, जिसका मतलब वर्टिब्रेटा होगा। तो यहाँ पर कुछ कोई भी आपको वर्टिब्रेटा दिख रहा है, जेलीफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश, ये वाला का सी हॉर्स है, यहाँ ये वाला आपको दिख रहा है। तो ये ट्रू फीलिंग का मीनिंग यही था। अगर आपको पता होता है कि इसमें गिल
होता है और ये भट्टीबाटा होते हैं तो सी हॉर्स ठीक था। 61 का नंबर डी इज द राइट आंसर, द सी हॉर्स। This is the 62 number question. Which one of the following sequence to electromagnetic is the magnetic? Correct in terms of ascending wavelength order. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं शुरू होता है कहाँ से, फास्ट एक्सरे नहीं गामा रे से शुरू होता है। तो पहले तो हमारा ऑप्शन ए एंड बी इज वैसे भी एलिमिनेटेड, एंड ऑप्शन बी गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, इंफ्रारेड रे, विजिबल रे। नो, पहले विजिबल रे होता है, उसके बाद इंफ्रारेड रे का रिजल्ट होता है। ठीक है, उसका माइक्रोवेव रेडियो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Then we come to 63. Which one of the following pairs of principal chemical constituents in water and their source is correct? Here is the answer is number A. Ca is present in the amphibole, feldspar and the gypsum. Number 64. Which one among the following group of organisms produces their own foods? Of course, autotrophs. ऑटोट्रोप्स अपने खुद ही प्रिपेयर करते हैं। हार्बिवोर्स जो कि घास खाते हैं, कार्निवोर्स जो कि घास खाने वालों को खाते हैं, और डिकम्पोजर्स जो कि सबको खाता है, जो कि सबको डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया की डिकम्पोजर्स। So, in which one of the following is appropriate sequential order of ecological succession? यहाँ पर आ गया ecological succession। इकोलॉजिकल पार्ट है सक्सेशन, उसे एक का एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो क्या होगा अगर एक जमीन है, यहाँ पर अगर ये कुछ जगह है, अगर मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, ठीक है, अगर एक जगह है, अगर एक जगह है, अगर मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए इस जगह का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पहले जगह पहले साफ होना चाहिए। अगर यहाँ पर जगह साफ हो, मतलब इस जगह में कुछ पूरा प्यार हो, तो ही जाकर मैं घर बना कर रहूंगा ना। अगर जगह पे पहले से ही लोग रहते होंगे तो कैसे होगा? तो उसे बोलते हैं न्यूडेशन। न्यूडेशन, न्यूड, ओके, न्यूड हो जाना मतलब पूरा वेजिटेशन उतार देना। न्यूडेशन इज द फर्स्ट स्टेप। अगर न्यूडेशन हो गया, उसके बाद हम बोलेंगे हमला, ये होगा इन्वेशन। अगर हमला मतलब उसके बाद इन्वेशन होने के बाद तो एक स्पीसीज का इन्वेशन नहीं हुआ ना, बहुत सारे मतलब बहुत, अगर एक जगह है बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे वैसे स्पीसीज आ गए यहाँ पर, तो उनके बीच में होगा कंपटीशन, इन्वर्सन, उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद कंपटीशन। तो कंपटीशन में जो कोई भी बच जाएगा वो करेंगे उस एरिया को स्टेबलाइज्ड। आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 63। चिपकू मूवमेंट इन टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। सुनिए, इंदिरा गांधी ने जो दिया था ऑर्डर की, उस हिमालय के पास जितने भी पेड़ हैं उनको मत काटो, ना चिपकू मूवमेंट में पेड़ को पकड़कर सब खड़े हो गए थे कि पेड़ मत काटो, हम यहाँ पर रहते हैं, ये सब वही। उसके बाद इंदिरा गांधी ने रोक दिया था, उस जगह पर जितने भी पेड़ थे काटने को सबको रोक दिया था। ठीक है, तो इट इज इन 1971 बाय द इंदिरा गांधी। The answer is option number 2, Chukku movement. And number 67, physics curve, capacitor, physics. Here is the right answer. Physical taking. So physics. Skip it. यहाँ पर थोड़ा आ रहा है 73 में आगे हमारे प्रेसिडेंट साहब जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या मतलब क्वेश्चन थोड़ा पहले पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई ए रेस treated under the scheduled caste category for all purposes under the Constitution of India.
distinctly fit precedent जैसे चाहे इसमें specify areas to treated under the scheduled caste. Okay. Second point, the President of India may specify a tribe to be treated under the scheduled caste. The category for all proposed under the Constitution, चाहे वो ट्राइब हो, चाहे वो रेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्रेसिडेंट उन्हें ऐड कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, मतलब उनके ऊपर ही सब है. But the Parliament by law can include a caste or tribe in the list of scheduled caste. Of course, right. All three answers are right. If you are can check it from article number 341, so clause A, B, C, D. There is some options. So 1, 2, 3, all are right. So number 3. Okay. Then, which one of the following statement is correct for the Constitution of the India? The National Commission for the Minorities appointed a special officer for the linguistic minorities. No, yeah. Special officer for linguistic minorities. It's, I think, linguistic minority. I can't get that article actually. पर ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इन्हें अपॉइंट नहीं करते क्योंकि ये लिंग्विस्टिक वाले होते हैं, सॉरी इन्हें अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्योंकि जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब प्रेसिडेंट के थ्रू ही तो होते हैं. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज हाउ appoints a special officer for the linguistic minorities. It's not article number 250, I think. Let's take it out. It shall be the duty of union to develop the Hindi language as the medium of expression for elementary studies. Right. अगर ये क्या क्या है not correct नहीं तो गलत बात है. फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार. It shall be the duty of union to develop the Hindi language as the medium of expression for the elements of composite culture. ठीक है. The word Hindustani is mentioned in the Constitution with reference to the enrichment of the Hindi language. Yeah, if you connect in those uses of G20 summit, easy just like to change the name India from the Bharat. ये इसका मतलब क्या होता है? हिंदी को वर्ल्ड लेवल पे लेके जा रहे हैं धीरे धीरे. Okay. So option D is every state shall endeavor to provide adequate facility for the instruction in the mother tongue at the primary stage of education. Of course, it is mandatory, but सबको प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में ही मिलनी चाहिए. ये इन्होंने कहा था गांधी जी का सोशलिज्म प्रिंसिपल है. जब एजुकेशन के ऊपर जब पॉलिसी मेक होना था, जब पॉलिसी बन रहा था, तब सब बोल रहे थे कि पहला जो प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश में लगे फिर लैंग्वेज में. अगर बच्चे अपने लैंग्वेज में अच्छे समझते हैं तो उन्हें उनकी लैंग्वेज में ही दो शिक्षा. जब वो बड़े हो जाए तब उन्हें देना अलग नॉलेज. So here the answer is option number A is the one. Okay. Given below are the 4 legal terms of maximum. ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, पर फिर भी लिखना ऑट्रेफियोस कॉन्फ्लिक्ट नॉन पीस इन इडम. ये सब डबल चोरी, मतलब एक ही सजा के लिए किसको 2 बार, एक ही क्राइम के लिए किसको 2 बार सजा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे 2 बार केस भी नहीं हो सकता है सिर्फ सेम क्राइम के लिए. और अभी ये तो एक रीड है. No person shall be commitment on here. It is the oddity, alterum, attempt. Just leave it. Leave it. Which one of the following statement, as per the third schedule of the Constitution in India? Okay. Third schedule में क्या लिखा गया है कि the member of the Parliament is free to take oath affirmation by swearing in the name of God. Oh, right. And second, the judge of Supreme Court has to be take the oath of affirmation by swearing the name of the Constitution of India.
77. Which one of the following pair of forest research center and their location are correctly matched? Okay. The Forest Research Center for Eco Rehabilitation at Prayagraj. Yes, right. The Forest Research Center for the Livelihood Extension. It is no, it is in Dehradun. The Forest Research Center for Skill. Center for Skill. It is livelihood. It is a forest reserve for the skill development. Get it? Skill development. Okay. Skill development. ये गलत था शायद इसका आंसर होता है छिंदवाड़ा एमपी इसका राइट आंसर बट इट्स इन देहरादून लिवलीहुड एक्सटेंशन है इट्स इन देहरादून एंड स्किल डेवलपमेंट इट इज इन एमपी इको रिहैबिलिटेशन ऑफ द फॉरेस्ट इट्स इन प्रयागराज एंड द डेवलपमेंट भोपाल फॉरेस्ट सेंटर फॉर द कोस्टल इकोसिस्टम इज इन विशाखापट्टनम so 1 to 4 are correct. There is the answer 2 is the right answer. So 78 number question please. Which one of the following is not an important center of silk textile industry in India? 28 in Kola. Formula Mumta Jamnagar. ये सब आपको मैप में ही रखना मानना पड़ेगा इसको मतलब कुछ करने से इसका समझने समझाने का कुछ है ही नहीं इसमें ठीक है द राइट आंसर इज सी 78 79 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली नॉट करेक्टली अच्छा नॉट करेक्टली सब कुछ ऑफ कोर्स इंग्लिश है कांजी लेक इन पंजाब पालो वेटलैंड इन मिजोरम इज राइट बट कुल्लूर लेक इन तेलंगाना not right. So 1 is the right answer. Put on next. Which one of the following tiger reserves are not situated in the Rajasthan? Just less than. Which one of the following tiger reserve is not situated in the state of Rajasthan? देखिए यहाँ पर पहले तो है मुकुंदरा हिल्स यहाँ पे टाइगर रिजर्व यहाँ पर टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं इसमें से मुकुंदरा हिल्स भी है रामगढ़ बिजदारी भी है तो जो कवाल और भद्रा ये दोनों नहीं नॉट करेक्ट आंसर इज नॉट सिचुएटेड आंसर इज कवाल एंड भद्रा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन कम टू द 81 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्बन population in India as per census 2011 is correct. More than 31% of the total population live in towns. Of course, आजकल ज्यादातर लोग गांवों से शहर की तरफ एथनाइज्ड काम की तलाश में क्यों अगर आप वैसे भी कोरिलेट नहीं कर पाते हो ना तो देखिए जीडीपी जब हमारा शुरू हुआ था ना इंडिया जब आजाद हुआ था तब एग्रीकल्चर में से हमारी जीडीपी को 47% ऑफ कंट्रीब्यूशन जीडीपी का आधा इस एग्रीकल्चर में से ही जा रहा था ठीक है लेकिन जब हम अर्बनाइज हुए शहरीकरण जिसे बोलते हैं अर्बनाइज हुए तो गाँव से लोग आने लगे शहर को उनकी लाइफ स्टाइल उन्हें अच्छी लगी तो गाँव से लोग धीरे धीरे कम होने लगे more than 31% of the total population live in town. लेकिन अभी हमारे जीडीपी का 70% जीडीपी में ये एग्रीकल्चर करता है इससे आगे कितना था तो the number of towns was more than 7,500. That's right. डिस्ट्रिक्ट 17 के आसपास डिस्ट्रिक्ट होंगे और उसके अंदर टाउन्स अगर आप उससे भी निकालने चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2-3 टाउन 4-5-6 टाउन तो होंगे ना तो इन सब क्वेश्चन को अगर आप नहीं जानते ना प्रॉपरली तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये सब इन नंबर में ही काउंटिंग खेल कर देते हैं ठीक है अगर नहीं घुस रहा है तो छोड़ दीजिए
ज्यादा होगा 120 क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन का आंसर देना, कुछ जरूरत नहीं होती। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, बट नंबर ऑफ डाउन्स वाज मोर देन, अगर आप ये नहीं जानते होगे ना ठीक से तो मत मारना। नेक्स्ट है, then the both 1 and 2 are correct. Then the 82 number answer is, which one among the following is not in situ conservation? तो in situ conservation क्या होता है? In situ मतलब जहां वो है उन्हें वहां पर ही संग्रहित, प्रोटेक्ट कर लो। एक्सिटू अगर इंस्टीट्यूट नहीं हो रहा है तो उन्हें ट्रांसपोर्टेड होकर, मतलब किसी और जगह पर जो कि उनका सही ओरिजिन नहीं है, वहां पर अगर हम उन्हें रिहेबिट मतलब उन्हें लाते हैं तो उसे बोलते हैं हम एक्सिटू कंजर्वेशन। लाइक द बॉटनिकल गार्डन एंड द जूलॉजिकल पार्क्स आर द एक्सिटू conservation. So here is the option as the botanical garden or the option B is the right. Then the option, the question number 83, mangroves represent, of course, that is soil tolerant vegetation. It's not a popular vegetation, not a plant vegetation, not a epiphytic vegetation. It's also salt. यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर हमको मिलता है ना, एक देखो अगर ये हमारे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर हो गया राजस्थान, ये थोड़ा के लोगों पर देखिए, ये जो एरिया हमारा सुंदरबन का एरिया हो गया, जो कि हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर हमको मिलते हैं मैनग्रोव। तो ये सॉल्टी लेक में ही हमको पाया जाता है, क्योंकि इनके जो रूट्स होते हैं ना, ये पानी के ऊपर तक निकल होते हैं, मतलब निकल आते हैं, क्योंकि सॉल्ट टॉलरेट भी होते हैं। ठीक है, तो आजकल मैनग्रोव के ऊपर क्वेश्चन क्यों आया कि आजकल मैनग्रोव लॉस हो रहे हैं, ठीक है, और इनका प्रोटेक्शन जरूरी है अवेयरनेस के लिए बच्चों को। इसका मतलब जियोलॉजी के ऑनर से हो, ये सब जानना आपके लिए सही नहीं है, ये बात नहीं है, आपको जानना चाहिए। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे। Then the next 84, number 84, which one of the following is the salt tolerance? Number B, which one of the following type of coral reefs are developed along the edges? This barrier coral reef, here are continental shells है ना, separated by the mountains, the barrier, the barrier reef. चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Which one of the following is the correct sequence of the typical soil profile from top to bottom? अगर किसी को कुछ भी नहीं पता होता ना इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो दिखाता हूँ क्वेश्चन, अगर कुछ भी नहीं पता होता ना, तो पता है कि सॉइल के ऊपर ह्यूमस तो रहते ही रहते हैं, तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। जो ह्यूमस किसके ऊपर रहता है? टॉप सॉइल के ऊपर, सब सॉइल के ऊपर थोड़ी ह्यूमस रहता है, तो आंसर बी इज द राइट। पहले ह्यूमस, इसके बाद टॉप सॉइल, इसके बाद एक्टिव जोन, सब सॉइल, प्लस वाटर, पैरेंट मटेरियल्स, आंसर बी इज द राइट। Fold mountains are formed in the tectonic setting by the form of convergent. जियोलॉजी के स्टूडेंट हो, पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। जब कन्वर्जेंट बाउंड्री दो प्लेट अपने कोर को खींचे हुए आते हैं, तो एक प्लेट होता है सबडक्ट और यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स होते हैं फॉर्मेशन। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट। देन ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 87, which one of the following is the thinnest layer of the earth? Of course the crust, the thinnest layer of the earth. Leave the physics chemistry question for tomorrow. The real science part 2. There just need some time here. Physics chemistry question in the detail. Okay, leave it. Which one of the following statement is not
Correct. It's the question number 97. Question number 97. Which one of the following statement is not correct with respect to the type of question asked in the Lok Sabha? The question asked in Lok Sabha, the type of question asked in Lok Sabha. Okay. There are question like three type of question. One is start question, second is start question, and third is the short notice question. The start question होते हैं ना is only which by the no, it's only by the oral answer, no written answer. The short notice is one which relates to the matter of urgent public importance. Okay, and unstart question is one to which an oral answer is not given. No, it's only in written form. It's only in written form. Only in written form. Construct question is only in written form, not in oral. No supplementary question can be asked on the construct question. Is right. Because ये होता है written में, तो इसमें कोई भी supplementary question आप नहीं पूछ सकते. So option what type of question are given below? There's an option ठीक से नहीं है. Just option. Okay. Which the following statements is not correct? But the answer A to first one and two, because D is right, C is right, 1, 2 is wrong. 97 question. Okay. 98. Which one of the following statement is correct about the parliamentary practice of asking question in the Parliament of India? The first hour of every sitting is called as zero hour. It's called as question hour. Is it right? The session हमारा 11 AM से शुरू होता है के 12 तक. ये जो 1 घंटा होता है हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में होता है 12 से लेकर 1 PM तक. ये जो आवाज होते हैं इसे ही हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर. It right? Yes, right. Number 2. Questions are generally asked by the members of the parliament from the ministers. Upon our discussion on the matters arising out of questions already answered can be held only in the Lok Sabha also. Questions cannot be addressed to a private. Why questions cannot be addressed to a private? So, who are the private members? You think now, who are the private members? Ambani? No. The private members are those who are not the part of cabinet minister. Who are not the cabinet minister. Thus, all ministers expect the cabinet minister private members. The bills are called also private bills. Okay, that's the private members. So questions cannot be addressed to a private member. Of course, in private member opposition is there. कैबिनेट को छोड़कर सब प्राइवेट मेंबर है तो प्राइवेट मेंबर में अपोजिशन भी है ना, तो वो क्यों नहीं समझ पूछ सकता? इज रॉन्ग. Only answer 1 and 2 is correct. Okay. 99. Consider the following statement with respect to the motions in the parliament. Okay. पार्लियामेंट अपनी जब डे टू डेज चलाते हैं ना, डेली वर्क्स, जब डिस्कशन हो रहा होता है ना तो कुछ मोशन का वो लोग यूज करते हैं. कुछ पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए हो गए, कुछ पब्लिक हियरिंग के लिए, मतलब अर्जेंसी आ गया, कुछ मनी कट मोशंस भी है बजट में. ओके, जब वो मोशन की चैप्टर हम देखेंगे तब डिस्कस करेंगे. सेंसर मोशंस जो है ना, यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशंस, बुलेटिन मोशन, कंगारू मोशन, बहुत टाइप के मोशंस है. तो इस पर जो क्वेश्चन में आया था वो था सेंसर मोशन. ये जो सेंसर मोशन और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, सेंसर मोशन किसी भी इंडिविजुअल
और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इंडिविजुअल और ग्रुप पर मिनिस्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ भी ग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं होता। क्यों ग्राउंड नहीं लिखते इधर? क्योंकि जो सेंसर मोशन होता है ना, ये इंडिविजुअल के ऊपर कि किसी ग्रुप के ऊपर ही चलाया जाता है। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर दिया जाता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया एक बार, तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुम तो गए। अगर सेंसर मोशन पास हो गया तो वो किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर दो तीन मिनिस्टर। इस सेंसर मोशन का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर मेजोरिटी ऑफ पार्टी में ना अभी डिस्कशन हुआ, वोटिंग भी हुआ, सब हाँ बोल रहे हैं लेकिन एक ना बोल रहा है कि भाई मैं नहीं दूंगा, तो कट सेंसर मोशन निकालो भाई इसे। कुछ कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेजोरिटी के सपोर्ट में नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो सेंसर मोशन किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए लाया जाता है या प्रूफ ऑफ इन होल। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको रीजन देना जरूरी है कि क्यों आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हो, हाउस ऑन द फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या आया है। सेंसर मोशन मोस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड इन व्हिच बेस्ट नो। कोई भी ग्राउंड यहाँ पर मेंशन करना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा डिजर्व नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आपको टर्मिनेट करता है कि एक मिनिस्टर को या फिर दो तीन मिनिस्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं है, एक मोशन ही है सिर्फ। A cut motion can be moved if in an individual minister, of course, but sensor motion of course, moved against an individual minister. A no confidence motion can be initiated in either house of the parliament. However, the government will fall only if the no confidence motion is passed in Lok Sabha. No, the no confidence motion can be initiated only in the Lok Sabha, not in either house. Okay. A no confidence motion must specify the charges against the Council of Ministers on the basis of which the motion is based. Okay, no confidence motion must specify. No, it's right. नो कॉन्फिडेंस मोशन में मेंशन होता है रीजन कि भाई तुम क्यों ला रहे हो नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर वो पास हुआ तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाएगा ना भाई, तो देखना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ दो ही आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट आइए। So, number question, which one of the among following statements about the United Nations is not correct? First option, all the main bodies of United Nations such as the General Assembly, Security Council, the Trustee Council were established in the founding of UN in 1974. Absolutely right. जब UN फाउंड हुआ था उसके साथ इस सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल के साथ इसे 6 काउंसिल्स मतलब बॉडीज इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। Then option number B, the United Nations system compromises not only the main bodies but also many bonds, programs, specialized agencies. Of course. The specialized agencies of the UN systems are funded by both voluntary and research contribution. He receives all type of funds because he needs them. The programs and funds of the UN system are financed only through the assist contribution by the public. ये सही हुआ तो ये सही हुआ तो ये कैसे सही हो सकता है? गलत हुआ है। Only through the source से भाई पैसा आ रहा है ना, तो दिस रॉन्ग। ऑप्शन बी, अगर आप ये जानते थे तो ये ट्राई कर सकता, ठीक है। इसके बाद 101 वाला देखते हैं। सॉरी, 101 वाला थोड़ा देखते हैं क्या दिया गया है। Consider the following statements with reference to a report titled "The Path to Equal," publishing in 2023, prepared by the UN Women and the UNDP, United Nations Development Program. Okay, this report introduced two new indices: Women's Empowerment Index and Global Gender Parity Index. So, what do you mean by gender gap? There is a key term that is arises gender gap. एक
लड़का एक लड़की जब एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, जब घूमने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, क्या उनको सही सैलरी दिया जा रहा है? क्या उनको सही हेल्थ, सही सिक्योरिटी, सही फैसिलिटी सब सही दिया जा रहा है? उसे बोले हम जेंडर इक्वालिटी। अगर ये सब नहीं दिया जा रहा है तो उसे ही हम बोलेंगे जेंडर इनइक्वालिटी। और इसी के ही बेसिस पे आया ये ग्लोबल जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। Less than 1% of women and girls live in the country with a high women empowerment and a small gender gap. Of course, a very small gender gap in our country, and only 1% of the women girls in the country are highly empowered. अभी भी लड़कियों को नहीं मिलता है चांस, उन्हें नहीं छूटते हैं घर, नहीं जा सकती इधर उधर। ओके, अभी नहीं मिलता है सब जगह। फिल्मों में दिखा देते हैं लेकिन अभी भी गाँव गाँव में नहीं मिलता है। So here is the both answer are right. Option 1 and option 2. Okay. Then is the right answer here. 102. Arrange the following events in the chronological order. पहले क्या क्या हुआ? The passage of the anti-defection law is in 1985. Mizoram was a state in 1980. Voting power in 1980. Maithili added in 2000. Maithili was added to the 8th constitution. जो है ना संथाल, बोरो, डोगरी, मैथिली ये सब एक ही बार में ऐड हुए थे। इस बार लास्ट में आएगा। आंसर डी इज द करेक्ट। Which one of the following statement about the good governance index is not correct? First, good governance index prepared by the the Department of Administrative Reform and Public Grievances in the partnership with the Center for Good Governance, Hyderabad was brought out in 2019. The framework of assessment includes some sectors and indicators. GGI 2021 exclude agriculture and allied sectors from the framework of assessment. According to GGI 2021, Jharkhand is the one of the few states that has, of course, Jharkhand, Bihar, badly. And Union Territory are not the part, no, Union Territory are not part of them. So here is 2, 3, 4. Three answers are right. Here I will mark. Okay. Then come to next 104. Which one of the following institution is not in the World Bank Group? Here is the answer. Investment Policy Framework for Sustainable Development is not under the World Bank. Okay? रट्टा मार, इसमें कुछ नहीं है बोलने को। Which one of these of IR वाले मतलब इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सब क्वेश्चन आएंगे। Which one of the following is a source of non-renewable gas, non-renewable energy? Non-renewable क्या होता है? Renewable मतलब जो हम निकाल सकते हैं, non-renewable मतलब जो यूज करेंगे अगर बात एक दिन को खत्म हो जाएगा, ठीक है? ऐसी एक एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। वरना इसे 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 सबको हम फिर से बना सकते हैं, पर न्यूक्लियर एनर्जी एक बार खत्म हो गया ना, यूरेनियम थोरियम कहाँ से बनाएंगे? ये सब वो लिमिटेड है, ठीक है? तो टेक के यूज करना चाहिए। इसे वो इसलिए आया कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द गोल ऑफ 2030। चलो उसके बाद आंसर न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। ये द बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम फॉर the Biosphere Reserve Program was initiated by, of course, MAB program of UNESCO, Man and Biosphere, MAB, Man and Biosphere. Okay. So the 107 number is which one among the following statement is regarding the ecotone is correct? What is the ecotone? Ecotone, the part of two ecosystem
who overlap each other and shares an area is called as ecotone. It represents a transitional region between two ecosystems. That is the right answer. It represents a region which is ecological perfect knot. It represents the ecological barren knot. It represents the ecosystem containing a marine organism knot. Right. Which one of the following biogeographic zones of India covers the largest area? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली किया था डिस्कशन, वहां पर एक आंसर था ट्रॉपिक डेसिडियस टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि हमारे इंडिया में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, अगर उस टाइप के फॉरेस्ट हमारे इंडिया में ज्यादातर पाए जाते हैं तो आपको क्या लगता है हमारे इंडिया ना ही प्यार है ज्यादा, ना ज्यादा ही हॉट है, ना ही पूरा एवरग्रीन पूरा इंडिया में एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं, हमारा इंडिया है सेमी एरिड रीजन। ठीक है, इंडिया में डेक्कन प्लेटू से अगर हम करते हैं स्टार्ट, इधर आके हमारा वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स पहाड़ होते हैं ना, यहाँ पर होते हैं बारिश, यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होता है, कम कम होता है। ठीक है, सब जगह बारिश तो सब इधर होता है, ज्यादा बारिश इधर 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 जहाँ पर एवरग्रीन है फॉरेस्ट, लेकिन जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, वहां पर किस रीजन होगा? एरिड नहीं, सेमी एरिड रीजन। एरिड हमारा है राजस्थान। जस्ट मिनट, so what is the answer? It's the semi arid region. Then the Keipul Lemjao National Park is located in which one of the following wetlands? The Loktak Lake of Manipur. According to the IUCN, देखिए इधर सब क्वेश्चन आ रहा है ना, नेशनल पार्क पे हो गया कि वेटलैंड्स पे हो गया, ये ज्यादातर आपको करंट से आएगा या फिर करंट को रिलेट करके आपको कोई भी नेशनल पार्क, अगर एमपी में अगर आज जगह नया नेशनल पार्क हुआ तो चलो 11 नेशनल पार्क में से कौन कौन है आपको मैथ्स के लिए दे देगा। ठीक है, इसी हिसाब से ये सब आते हैं, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो I next, according to the IUCN red list, a vulnerable क्या बोलते हैं इसको? Vulnerable. According to the IUCN red list, a vulnerable species is one which is likely to become endangered in the near future. Is high has a very high risk of getting extinct. The getting extinct in the wild तो हो गया हमारा जो endangered वाला सिचुएशन आ गया पूरा रेड लिस्ट वाला, वो नहीं, इट्स नॉट ओनली टू सर्वाइव, नहीं, इट्स नॉट ओनली टू सर्वाइव, इट इज लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन न्यूअर फ्यूचर। अगर इसको सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया गया इन वनरेबल्स को तो ये आने वाले फ्यूचर में एंडेंजर्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, so